this university, uh, you know that Buddhism developed during the 7th, 6th century BCE, and it is such a faith and tradition that it crossed the boundaries of Bharat during the period of Ashoka. And his visionaries not only covered different far places within our country, but he sent his son and daughter, Mahendra and Sugmitra, to Sri Lanka. And as Professor Naveen Mehta was telling, that the sapling of Bodhi tree, under which the Siddhartha got enlightenment and became the Buddha at Bodh Gaya, you must have visited also, because you visited recently visited Nalanda, Bodh Gaya, etc. Planning. Okay, you're still planning, not gone. And you'll see that, and it is believed that the average age of people tree is 500 years. So maybe some may die or get dry before that, but on an average age is 500 years. So the 5th or 6th generation must be there. So the king of Sri Lanka requested King Ashoka of Magad that you please send somebody, some lady, some nun, who could just deliver the message of the Buddha to the royal ladies and send a sapling of the Bodhi tree also. And she took it, and that was planted the then capital of Sri Lanka, Anuradhapur. That was Anuradhapur, not Colombo. And the president of Sri Lanka had brought the sapling of that tree, which Netaji told that was planted here in our campus. So that way, this tradition is continuing. Buddhism, or so to say, all the religious and philosophical faiths of Bharat have spread throughout the world, not on the basis of sword or coercion or something to attract just do some greed. It is full of the message of our country. All the religions are just full of love and compassion, and it has not compelled anybody or any community to adopt it. It happened in the case of Buddhism also. So when Ashoka sent his missionary people to Sri Lanka, to Myanmar and Thailand, to Kabul and Kanishk, Afghanistan, present Afghanistan, etc. They went there with the message of love and compassion. And the beauty with Buddhism is that it adjusted with the local culture and local traditions. That's why we find various forms of Buddhism. Thai Buddhism, Sri Lankan Buddhism, Korean Buddhism, Myanmarian Buddhism, Japanese Buddhism. So likewise, the basic essence is the same, but the tradition have diversified. So even today we find that many friends of mine, many scholars, not necessarily my friends, but people in the various countries of Europe, America, even Africa, I have found some people, they have become Buddhist monks, not because of any coercion or any compulsion, because they got convinced that the message of the Buddha contains the message of humanity and love and compassion. That's why we tell that even in the present day situation, when wars are going on in different parts of the world, the ultimate solution is peace and love. How just Zelensky and Putin may continue their war for 10 years or 15 years, but ultimately they have to sit on the negotiation table and
we have to start peace. Peace. How peace can be achieved. That is the solution. That is the message that wise people of our society, our world, they come together, they try to find out the solution. And that is the ultimate. That is why our humanity is still continuing. So, this our university, Buddhist and Indic, it's not confined to Buddhism only. It is all the aspect to it covers the all traditions which developed in our country. Sanatana tradition is definitely the earliest on the whole in the whole world. Vedas are undisputedly the earliest literature in this world. And of course, it continued in oral tradition for centuries and centuries. Later on, they were brought into written form. It happened with the message of the Buddha also, with the Jain tradition also. They were written later on, but they continued their journey in the oral form. And those values, because those messages were full of the message of love, compassion, and humanity. That's why they continue. They are still surviving. And we are the Sanchi University. We are continuing with those messages. We should try to understand, to learn how peace can be brought, how peace can be re-established again and again if there is some disturbances. So I don't intend to give any lecture on that. I am very happy and delighted that I'm obliged to Shri Ashok Kodhali, who accepted my request to bring this whole gathering to our university to visit the places of archaeological interest all around. And I'm thankful to all the people, all the delegates of this team, that you spared your time and came to us and had an interaction with us. कि जो अशोका थे वो 200 साल बाद में आए थे बुद्धा के यहाँ सांची स्तूपा में आने से पहले, तो दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन बना है वो मैं उसके बारे में थोड़ा पूछना चाह रही थी कि वो मतलब इतने समय के बाद आए और फिर भी उन्होंने इतना कुछ यहाँ पे बुद्धा के लिए किया, जो था बुद्धिज़्म को इतना उन्होंने उसका प्रचार किया था, तो उसके पीछे की कहानी क्या है शुरुआत करने के लिए बातचीत? भारतीय ट्रेडिशन हो या बौद्ध परंपरा हो या जैन परंपरा हो, ये मौखिक रूप में बहुत वर्षों तक चलती रही, सैकड़ों वर्षों तक। बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ कि वो एक बिलीफ सिस्टम है हमारे यहाँ। जिस समय में भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से वो बुद्ध हो गए, तो उन्होंने उसके बाद 45 वर्ष तक और जिए। और एक संत थे, तो जहाँ तहाँ भटकते रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे, जो और लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते थे उसको। तो उनका जब पहला उपदेश उन्हें सारनाथ में दिया। आप विजिट करेंगे उसको, सारनाथ को उस जगह कहते हैं ऋषिपतन मृगदाय डियर पार्क। अभी वो दमेक स्तूप है और श्रीलंका का जो महाबोधि सोसाइटी का वहाँ पर मंदिर है और वहीं पर है। तो उन्होंने पहला उपदेश वही दिया और बहुत तेजी से उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, 60 हो गई और सभी के सभी बिल्कुल सेंटिटी के हाईएस्ट पॉइंट, प्यूरिफिकेशन के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच गए, जिसको अर्हत्व प्राप्ति कर अर्हत हो गए, जिसमें नील क्षीर विवेकी हो गए कि उनका कोई बायसनेस नहीं था और कोई कंफ्यूजन नहीं था। ऐसे परम संत लोग जो थे जिनको अर्हत कहा, तो उन्होंने कहा कि चरत भिक्षवे चारिकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय सुखाय देव मनुष्य। ये पाली में है।
कि जाओ भिक्षु, चलो चढ़ते जाओ, विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ, और लोक के कल्याण के लिए, लोक के सुख के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, देवताओं के भी कल्याण के लिए इस सद्धर्म का प्रचार करो। दो व्यक्ति एक साथ कभी मत जाना, क्योंकि दो एक इकट्ठे रह जाओगे, तो अलग अलग जाओ। तो उनके शिष्य लोग जहाँ तहाँ फैलते गए, और वो ट्रेडिशन जो था वो मौखिक परंपरा में ही वो चलता रहा। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण का डेथ होने लगा, तो उनके परम शिष्य थे आनंद। आनंद ने उनसे पूछा कि भगवान, आपके बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा? Who will be our guide, our teacher after you? आप किसको अपॉइंट कर रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं कर रहा। यो च मया धम्मं च विनयं च देशिता, जो मैंने धर्म और विनय के उपदेश तुम लोग को दिए हैं, जो विनय का मतलब डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, और जो उपदेश और दिए हैं धर्म के, वही तुम्हारे गाइड होंगे मेरे बाद। अब प्रश्न खड़ा था कि बुद्ध ने तो एक जगह तो उपदेश दिया नहीं था, 45 साल तो एक जगह बैठे नहीं, न टेप रिकॉर्डर था उस समय कोई। तो लोग, अपनी मेमोरी इतनी तेज थी कि लोग दिन में उपदेश करते थे और शाम में बैठ करके उनके शिष्य लोग अपनी यूनिवर्सिटी में उसको बिल्कुल डिस्कशन करके एक एक वर्ड को याद करते थे। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी, ये वर्षों तक चलती रही, और उसी ट्रेडिशन में अशोक को भी मिला। अशोक के टाइम तक चल करके, सॉरी, अब हुआ कि ये जो अलग अलग जगह बातें की हैं उन्होंने, वो एक जगह कैसे कोडिफाई हुई। तो उनके डेथ के 3 महीने के बाद, उस समय की मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, जिसको आजकल राजगीर कहते हैं। वहाँ पर वहाँ का राजा था अजात शत्रु, उसने स्पॉन्सर किया, और जो उस बेस्ट माइंड थे, बेस्ट अर्हत थे मेमोरी में, 500 ऐसे लोग गैदर हुए, इकट्ठे हुए, वहाँ असेंबल हुए। वहाँ की एक सप्तपर्णी गुफा थी उसमें, और वो सारा द होल प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय अजातशत्रु, और वो कई महीनों तक चली। वो संगीति जो काउंसिल बोलते हैं अंग्रेजी में, और संगीति का हुआ कि सब लोगों ने विचार करके कि यहाँ बुद्ध के वर्ड्स क्या थे, बुद्ध के वर्ड से क्या थे। तो उस समय में महाकश्यप बहुत बड़े उनके शिष्य थे, जो चेयरमैन हुए उसके, और आनंद और उपाली 2 व्यक्ति थे। उपाली जो थे वो बहुत बड़े कानून विशेषज्ञ थे। उनसे कहा कि अच्छा बनते उपाली, बनते लोग होते हैं रेवरेंट, अच्छा बनते उपाली, ये बताइए कि भगवान ने पराजित का ये उपदेश कहाँ दिया था, क्या नियम बनाए थे? तो उपाली एक्सप्लेन करता था कि एक समय में ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, तब भगवान ने ये नियम बनाया। फिर दूसरा पूछा कि अच्छा ये बताइए कि कोई भिक्षु जब भिक्षाटन करने जाएगा तो कैसे कपड़े पहन के जाएगा, उसका चलना कैसे होगा, वो कैसे बैठेगा, हल्ला करेगा कि भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, या चुपचाप रहेगा? उसके बारे में क्या कोड बनाया? भिक्षाम दे। हाँ, नहीं, जैसे भिक्षाम दे हिंदुओं में है, वहाँ पर चुप रहते थे, वो कुछ नहीं बोलना है। और जब घर की मालकिन जो है वो जब देखेगी तो उसको आकर देगी। And he was not supposed to disturb the normal routine work of the household.